Hello everyone and welcome once again to MJ's Maths and Stats. That's MJ Magic Studio to you. Next is again game logic games which are solved using worst case scenario. There can be many different type of games or associated situation in worst case scenario. एक सिंपल सा केस लेते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल. In a box, there are 4 pairs of black socks, all same type, and 5 pairs of white socks. Clear? Blindfolded, or suppose this box is in a dark room. How many socks you will pull out from the box so that it's guaranteed that you have got 1 pair of socks of any color. How many socks at one time you are picking up only one? और how many socks? ऐसे हाथ डालो और कितने socks बाहर निकालोगे? You are confirmed that out of whatsoever socks you have pulled out, there is at least one good pair. One good pair का मतलब समझते हैं ना? दोनों या तो black होना चाहिए या दोनों white होना चाहिए. क्लियर? कितने निकालोगे? ठीक. मिनिमम पूछा जा रहा है आपसे, मैक्सिमम नहीं. मैक्सिमम में तो आप बोलोगे पूरा उल्टा कर देंगे. मैक्सिमम में तो आंसर 18 हो जाएगा. We are looking out for the minimum. Minimum number of socks need to be pulled so that be sure that we have pulled 1 pair of same colored socks. इसीलिए इसको बोलते हैं worst case scenario. गंध सोचो, गंध सोचो. पहला मौजा निकाला, किस कलर का है? गंध सोचो. बोलो किस कलर का है? ब्लैक. दूसरा मौजा निकाला, गंध सोचो, किस कलर का है? व्हाइट. गंध मतलब डू बैक टू योरसेल्फ. व्हाइट. अब कौन सा निकाला? अरे कोई भी निकालो, कलर मैच करेगा. आंसर इज 3. You go home and try it today. You go home and try it today. Keep pairs of black and keep pairs of different color, and blindfolded you pull 3 socks. 101% there will be 1 pair of socks. किसी ने बोला सर तीनों ब्लैक है, तो 2 तो है ना. सर तीनों व्हाइट है, अरे 2 तो है ना. 2 व्हाइट है, अरे 2 तो है ना. 3 अलग अलग तो हो नहीं सकते, तो कितने निकालने पड़ेंगे? 3. Clear? Now I am changing the question and now you will understand the meaning of worst case. Now the question is how minimum number of socks you need to take out to be sure that 1 black pair of socks you have in your hand. This question is different from the previous one. Previous one was any one set. वो white भी हो सकता है, black भी हो सकता है, but minimum number of socks you need to pull to be sure that you have 1 black pair. Now give me the worst case. Answer. 7? No. 11? No. 12 is the answer. समझ में आया कैसे 12? Worst case. गंध. बुरा क्या होगा आपके साथ? सर ये 10 के 10 व्हाइट मोजे पहले आ गए हाथ में. यही तो हो सकता है ना बुरा. Worst case means what is the limit of bad that can happen to you? I have pulled 10 socks and all 10 are white.
Now I pull two more, and obviously both will be black. So minimum number is 12. आंख बंद करके 12 मौजे खोज लो, गारंटेड उसमें एक ब्लैक पेयर होगा. सर उसमें दो ब्लैक भी तो हो सकता है, होने दो. तीन भी हो सकता है, होने दो. चार भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है. पांच हो सकता है, नहीं तो चार मैक्सिमम है. अरे होने दो. लेकिन 10 सॉक्स निकाल के यू हैव नो गारंटी दैट यू हैव अ ब्लैक. डू यू हैव अ गारंटी? यू हैव प्रोबेबिलिटी, यू डोंट हैव सर्टेनिटी. क्योंकि 10 अगर जो सॉक्स निकाला, दैट कैन बी ऑल व्हाइट. क्लियर? अगर ये क्वेश्चन होता वन व्हाइट पेयर, तब आंसर क्या हो जाता? 10. 10, क्योंकि 8 ब्लैक निकलेगा, देन बाद में 2 निकलेगा, देन योर आंसर इज 10. गुड. अब मजे की बात. नेक्स्ट, अब मजा लेते हैं. क्वेश्चन चेंज कर रहा. Now you don't have socks, you have got gloves. What is the difference between socks and gloves? Socks का leg different नहीं होता है, unless and until it is a thumb socks. But gloves different होता है. Left hand glove will go in left hand only, right hand glove will go in right hand only. ठीक है सर, लेकिन मैंने ग्लव्स देखा वो राइट हैंड वाला लेफ्ट में चला, तो नहीं ये लेदर ग्लव्स है. ठीक है, वो हेयर डाई करने वाला ग्लव्स नहीं है जो किसी भी हाथ में घुस जाता है. लेफ्ट हैंड विल गो इन लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ग्लव्स विल गो इन राइट हैंड. अब आंसर करेंगे. एक लास्ट क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मिनिमम नंबर ऑफ हाउ मेनी gloves you will take out to be sure that you have taken out one pair of gloves of same color? Think bad. 10. Okay. Think bad. Think bad. Start thinking bad. Start thinking bad. Whenever in this case, always start with the highest number. ठीक है, highest number से start करेंगे. I got white left, white left, white left, white left, white left. गंध 5 निकाले लेकिन कोई काम के नहीं. Then black left, black left, black left, black left. 9 निकल गए, कोई काम के नहीं. अभी 10वां कोई भी निकालोगे, it can be either black right or white right. It will pair with these. Answer is 10. Answer is 10. बराबर. नाउ इसका आंसर तो हो गया 10. अगर मैंने बोला व्हाइट, व्हाइट कलर का पेयर आना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर? Minimum number of gloves you need to take out to be sure that you have got one pair of white gloves. You will start with consuming all the black gloves first. 4, 4, 8, then 5 left, and then 1. Answer will be 14. और अगर black का pair बोला तो you will take out all white first. 10 plus 4 plus 1, 15. क्लियर? ठीक. इसका मतलब सिर्फ 10 निकालो तो कोई एक पेयर कंफर्म है. ठीक है, 15 निकाल लो तो ब्लैक कंफर्म है. आपको ये नहीं पता, 15 निकाल लो व्हाइट भी कंफर्म. 15 निकाल लो, आपको ब्लैक और व्हाइट दोनों कंफर्म है. 10 में सर, 10 में दोनों कंफर्म है, कोई एक कलर कंफर्म है. आइदर यू विल गेट द कंफर्मेशन फॉर ब्लैक और व्हाइट. अगर क्वेश्चन में पूछा गया मिनिमम नंबर टू बी पुल आउट टू बी श्योर दैट यू हैव वन पेयर ऑफ बोथ द कलर्स, आंसर इज 15. क्योंकि 14 और 15 में बड़ा कौन है?
15 है, इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? 15। आपका आंसर 14 नहीं हो सकता। अगर आप 14 बोलोगे तो हो सकता है 8 यहां से निकले, समझे ना? ये व्हाइट के लिए 14 बोला है, तो हो सकता है 14 में 10 यहां से निकल जाए और फिर 4 यहां से लेफ्ट का ही निकले। पक्का आपको ब्लैक का पेयर नहीं मिलेगा। 15 निकाल लो, 100% आपको ब्लैक और व्हाइट दोनों का पेयर मिलेगा, चाहे आप कैसे भी कैलकुलेट कर। बोलोगे इसका वर्स्ट केस 10 यहां से निकला तो 4 और 1 ब्लैक भी निकलेगा। इसका वर्स्ट केस 8 और 5 13, 13 के बाद में 2 और आपको मौके दे रहा हूं, पक्का निकलेगा। क्लियर? तो रीड द क्वेश्चन ऑल्सो। किसी ने बोला सर ब्लैक के लिए तो मैं 2 ही निकालूंगा और हो सकता है कि दोनों में ही पेयर बन जाए, लेकिन दैट इज प्रोबेबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी। These are question of certainty which need to be solved with worst case scenario concept. इसमें probability नहीं यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे।